Mumbai, the city of dreams, the city that never sleeps, the city known for embracing millions of new dreams every single day. There are various aspects of Mumbai that make it unique in a number of ways, whether it is its crowd, its food, its culture, Bollywood, Mumbaiya spirit, and yes, how can we forget its local trains? The Mumbai local railway lines are considered to be the lifeline of this city, stretching across 3 separate networks of Western, Harbour and Central lines. Almost 6.1 million commuters travel by local trains every day. It is a world by itself, a completely different habitat with different rules of survival. And here you meet with one of the most unique and integral phenomenon of Mumbai local trains. So what kind of things do you personally buy from train hawkers which is useful to you during your journey? Mostly pens, earrings, daily stuff. Usually whatever I like which I think is useful to me. काय चाप कानातले बांगड्या आहे असं बहुत खरीदी थे बहुत. अरे सब रबर्स क्लिप चिकू फ्रूट्स कुछ क्लिप वगैरह और या किताबें वगैरह आते हैं कुछ घर की जो चीज़ें आते हैं जैसे ब्रश वगैरह सब आता है ब्रश मारने की दवा वगैरह You can get literally anything and everything in the Mumbai locals. In the past few decades, it has slowly developed into what can be easily called a supermarket on wheels. Every single day, there are millions of consumers considering, opting for, and benefiting from these services in the locals. There's a 6 p.m. train from Dadar wherein there's a particular bhel wali who comes in and it's really very tempting. That's around the time when everyone comes back from work very hungry. I guess one of the tempting eatables offered by them. So yeah. तो घर के लिए यूजफुल हर चीज़ ट्रेन में मिल जाती है आपको? हाँ, हर चीज़ मिलती है और क्या है हमारा टाइम भी बच जाता है. तो आपको मार्केट नहीं जाना पड़ता? नाही मोस्ट प्रॉब्ली नाही जाना पडतं और सस्ती किंमत में भी मिल जातं. तसं त्यातल्या काही गोष्टी इंटरेस्टिंग असतात म्हणतात. एक 10 रुपयात 3 पेनं मिळतात काही वेळेला. त्याच्यानंतर एखादा नवीन कुठला तरी एखादा आयटम येतो. तुमच्या कंगवात साफ करण्याची पुढे बाहेर मिळत नाही. ते फक्त गाडीत काही वस्तू या फक्त या गाडीच्या फेरीवाल्यांकडेच असतात. The products are useful, reasonably priced, and are offered in a delightful variety. They are brought from the main wholesale markets of the city right to your seat. कहाँ से लाते हैं आप ये माल? अहमदाबाद से, सूरत से, जामनगर से. खुद जाके लाते हैं आप? खुद हम सैटरडे संडे को जाते हैं. अच्छा, विलेपार्ले में कहाँ से? इंदिरानगर. कुठून येतो हा माल? हाँ आम्ही घरी बनवतो. दादर से. एक नंबरच्या बाजूला आहे ना जलाराम गल्ली. The range of products vary from something as practically useful as a toothpick to fancy items like earrings, cosmetics, and even dress material. Hawking is mainly conducted in ladies' compartments. One can guess why. Each of these hawkers have something unique in offering their goods. Under the single roof of a moving train compartment, there are n number of marketers offering their goods, advertising, convincing, and successfully selling their product to the commuters. For the hawkers, we are not commuters, we are their consumers. लो लेडीज से एक लिप से वक्कल है, रबर बैंड से, मोबाइल कवर, स्टीकर है.
चंदन पावडर 20 रुपया बागड़ 20 रुपया बागड़ ना बागड़ 20 रुपया बागड़ 20 रुपया हां से पीपीले 5 के आती है हो आवडा दो ताई एक प्रकारची त्यांना रोजगाराची संधी आहे आणि शिवाय विविध असं म्हणजे उद्योजकांनी ट्रेनिंग नाही आहे त्याच्यातून एखादा मुलगा थोडीशी काही रिक्षा घेऊन आपला स्वतःचा उद्योगही छोटासा सुरू करू शकेल. आज जी गोष्ट मी करतोय की उद्या मॅन्युफॅक्चर सुद्धा करायला लागू शकेल त्याच्याकडे त्याला कळेल त्याच्यात संगीत पेक्षा त्याला कदाचित जास्त पैसे मिळतील. त्यामुळे ही निश्चितच चांगली गोष्ट. One single journey in a Mumbai local train and you will find yourself unknowingly lured by their offerings. It doesn't matter if you had any intention of buying a particular product or not. What they do is create a mind space for their goods. And the next time you see them selling the product, you tend to think, so what? This looks interesting. In fact, I was just standing there looking at their clips thinking if I wanted to buy a clip, the price would probably go up by tenfold. So, I'd go somewhere else to buy my clip. Well, for the commuters it might be a petty priced products, but for the hawkers, it's a serious bargain. Also, first sale of the day is auspicious to all of them. They prefer not to bargain on this first sale, popularly known as Bohni. चांगली बोनी करा देवासारखी पटापट माल कपू द्या बोनी होते ना पुढे होने का टाइम है मैडम टिकट मत चाहिए पहली भगवान Whether it be a toddler or an older person, these hawkers have their price bargains fixed in their mind. तो उसमें सब पे 10-5 रुपए मिलता है 20 रुपए या क्या है 105 आवे पड़ता नहीं है मेरे को 19 रुपए लगाऊंगा मनता It is not only useful products that are sold in these trains, but there's also a space dedicated to entertainment in the form of singing and music. There are many physically handicapped singers who earn their daily bread and butter by showcasing their talents instead of begging. The range vary from Bollywood songs to regional instruments, devotional and thoughtful songs too. In turn, they are rather contributing to create a harmonious environment in the compartment during the journey. I prepared this song for against tobacco and liquor because I never smoke and I don't take liquor, so that's why I wanna smoke free my Mumbai. नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी नशा से डरना नशा जहर है जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी. But interestingly, behind these loads of wonderful varieties of products, there are various life stories unfolding. It is only a single consideration that might open entire life stories of our relentless service providers. 40 वर्षापासून गाडी धंदा करते मी. माझी सर्व्हिस या गाडीमध्ये झालेली आहे. लग्न नाही झालं तशी गाडी धंदा करते. पहिले आमची आई ऐकायची, आईच्या नंतर मी यायची कटपोलका घालून. आईवर हा धंदा करायला लागून गेले तर हा धंदाच करते. मैं तो बहुत 4-5 साल से कर रही हूँ. बता दे क्या है इतना भूख लगे कि जाना पड़ता है. एक लड़की है बीमार है. मुंबई की उम्र क्या होगी बेटा? 10. स्कूल जाते हो? 9 बजे जाता है 11 बजे आता है. अच्छा, फिर पढ़ाई कब करते हो? रात. और कितने सालों से ये काम कर रहे हो? बहुत साल से. कितने साल से? 5 साल से. ये बिजनेस में मेरी पढ़ाई नहीं हुई और मेरे
हस्बैंड है इसके लिए मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड ऑफ हो गए, ट्रेन में से गिर गए। कैसे गिर गए? जैसे डोर पे खड़े थे, जैसे स्टेशन आया तो उनको पैरालिसिस का अटैक आया, गिर गए प्लेटफॉर्म पे, सर में ज़्यादा चोट लग गई। It is quite fascinating to see how these hawkers would always leave their stock with interested passengers and do not mind going to another corner of the compartment to continue their bargains. It is absolutely fine with them as they have complete faith on these unsaid rules of honesty shared between the commuters and the hawkers. Like all other businesses, surviving here is not a cakewalk for them. But unlike others, there are some serious legal issues involved in train hawking. रेल्वे कायदा कलम 144 अन्वये पूर्णतः फेरीवाल्यांवर कारवाई करावी अशी कायद्यामध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आलेली आहे. This is what the law says. But crores of illegal bribes, commonly known as hafta, are taken from hawkers by officials under the excuse of doing their duty. Complete hierarchies of police and railway officials thrive on these illegal earnings. When asked about it, they give generic, casual answers, often leaning towards denial. हे सर्व चुकीच्या माहितीच्या आधारावर आहे. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून काही अंध फेरीवाले, काही अपंग जे लोक आहेत ते आपला उदरनिर्वाह ह्या किरकोळ धंद्यावर करता आहेत. त्याच्यावरती त्याच्यावर काही मुठभर लोकांच्या काही कृत्यामुळं तो एक बदनामीचा डाग लोकांवरती लावला गेलेला आहे. परंतु हा जो आहे हा अधिकृतरित्या हा आरोप हा सगळा खोटा आहे. But reality check of the same statement shows a different picture altogether. प्लेटफॉर्म पे जब पुलिस बैठते हैं, ये लोगों के पास से कई चीज़ें लेते हैं, कभी-कभी पैसे लेते हैं. अच्छा, आपने देखा है? असं आहे की हप्ता फेरीवाल्यांच्या बाबतीमध्ये कंपल्शन झालेलं आहे आणि ते नाही भरलं त्यांचा धंदा होऊ शकत नाही. किंवा जो चोरी लबाडी करतो, हप्ता घेतो, भ्रष्टाचार करतो, तो स्वतः कबूल करणार आहे का मी हप्ता घेतो, मी चोरीमारी करतो, मी भ्रष्टाचार करतो. ए पोलीस पकडतात काय रे तुला? पकडते. हां, मग पैसे घेतात तुझ्याकडून? किती घेतात? येते 50-60 पकड़ते. पकड़ने के बाद क्या करते हैं? पैसा लेते हैं? पैसा लेता है. रसीद मिलती है उस पैसे की? नहीं मिलती. कितना पैसा लेते? कभी 200-300 ऐसा लेते हैं. पकडतात? मग किती पैसे घेतात? 10-20 रुपये घेतात. असं स्पेशलवाले पकडे ना तर 100-200 रुपये घेतात. पुलिस तर बाप रे, विचारू त्यांचं तर काय सांगूच नको आम्हाला. वो पकड़ के बंद कर देता है. बंद कर देती है. पैसा मांगता है, दे दिया तो छोड़ दिया, नहीं दिया तो केस बना. कितना पैसा मांगते फिर भी? क्या 20 रुपये या तो 50 रुपये लेता है. इसका तो 100 से ऊपर कोई नहीं लेता. रोज देते हैं. कितना देना पड़ता है? एक दिन का 100 रुपये. अच्छा, फिर 100 रुपया दो तो रसीद मिलती है? रसीद कुछ कागज देते हैं वो? हाँ, ट्रेन में धंधा करते हैं ना. हाँ, उसका पैसा लेते हैं. पकड़ के डाल देगा. कहाँ पे? जेल में. मानकुर्द में लेके जाके उधर रखते हैं. कभी लेके गए आपको? बहुत बार. तो मारते हैं वहाँ पे? नहीं, मारते नहीं है. मारते अभी क्या वो सेक्शन चालू है ना, मारते हैं. क्या सेक्शन चालू है? मतलब बड़े लोग को, मेरा बड़ा भाई को पट्टे से मारा. वो चक्की का पट्टा रहता मालूम है ना, उससे मारा. क्यों मारा? वो धंधा करने के वास्ते. और दीदी पुलिस वाला पकड़ के लेके आता है, बंद कर देता है, 1200 रुपये फाइन मारता है. पैसा नहीं मेरे. और गजरों के साथ क्या करता है? गजरा सब लेके पटरी में फेंक देते हैं. Unfortunately, the hawkers are utterly ignorant about their plight. But what is even more numbing is that they have no platform to make their problems heard. During the shoot, there was a strange behavior seen when they were put in front of the camera. It would take a lot of convincing, after which they would confront the camera. चैनल पर नहीं दिखाना मैडम, नहीं तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा. दीदी माल का मत निकालो. क्यों नहीं बताने का?
अरे आपकी क्या होती है ना पेपर में The hawkers often use a chain and a particular hook to hang their products for the display in a fast-moving train. Mr. Chetan Dasgupta, shopkeeper of a hardware store near Kurla station. The train hawker kids often buy these S-shaped hooks from his shop. He had tried bringing these oppression issues to light with the help of the news channel Sahara Samay 7 to 8 years back. So for buying that, they had come to me. So when I was talking to you out of curiosity, they told me certain things which moved me basically. While coming in the morning, these constables will never trouble them. But after 3 or 4, when they are returning home, that time most of them are getting caught by these constables. So what this constable used to normally do is catch hold of them, and whatever is the day's earning and whatever the collection they have made out of selling the goods, they will just grab that money. So they were very fearful about this constable. So I felt really moved that something should be done. So in fact, I tried and contact this Sahara Samay. These kids also told on camera that these things happens with them. But my objective was that maybe the authorities will do something about the constables who are supposed to be troubling this kid. But it went the other way, and in fact the constables became more strict with the kids, and they were not allowed to do any business and so on. So now if you try and contact them, possibly they will be fearful and they won't be talking to you on camera. See, when I spoke to them, I found that these kids, they are having no earning member at home. So they are the only earning member, and they are looking after the family, in fact, by doing this small sort of a business. And it is much better, instead of going for a pickpocketing or something like that, they were earning by their labor. So our country is not recognizing. धंधा नहीं करता था, मेरे को स्कूल और डांस का बहुत शौक था ना दीदी। अभी घर छोड़ के मेरे को 6 महीना हो गया। मिलती है ना मेरी मौसी तो बोलती है तेरी माँ को पैसा दे के जा। कभी ये नहीं पूछती है कि मेरी मौसी बेटा तू कैसा है, किधर रहता है अभी। कभी माँ से मिलने की कोशिश की आपने? बहुत बार, 2 बार गया था। एक बार 100 रुपया दिया, मेरी माँ बोली हर संडे को आते जा, पैसा देते जा। मेरी माँ का भी कुछ सच नहीं लगता मेरे को ना, क्योंकि मेरी माँ पहला बोली 100 रुपया बाकी है, फिर बोलती है 200 रुपया बाकी है। अब मैं भी किसको सच मानूं? पिताजी क्या करते हैं आपके? नहीं, ये गुजर गए। कब गुजर गए? अभी 5 साल हो गया। किस वजह से? दारू पीने से। मुझे ऐसा लगता था कि मैं डांस करूँगा तो मैं बहुत आगे बढ़ूँगा, तो मुझे ऐसे गरीब लोग की तरह रहना भी नहीं पड़ेगा। Yeah, I saw them and I think just it's hard work for them, but it's better to do that than they back at the street. And I was really feeling like guilty for them. They had to carry all this stuff, and I think they do a good job. So Dr. Sharit Bhaumik is the Dean and Professor of Labour Studies at Tata Institute of Social Science, India. He has done an elaborative research on this topic. He believes, rather than inconvenience to the commuters, the train hawkers are the mere needs of a fast-moving metropolitan city like Mumbai. They just want to live with dignity. That means they are not taking out demonstrations saying that we want jobs. They are not pressurizing the government for these things. They are not even involved in vandalism and theft and burglary, antisocial activities such as these. They are trying to make an honest living. But even that is not being permitted because they have been pushed out. Ironically, many of them are just unaware that they are being oppressed and feel this vicious circle of hafta is the only way out to deal with their illegality. अच्छा, पोलीस का पकडतात तुम्हाला असं वाटतं तुम्हाला? एक आम्ही आमच्या पोटासाठी मरते म्हणून त्यांचं पण पोट असते ना, असं थोडी आहे. आता आपलं जसं पोट तसं लोकांचं पण असतंय ना. मग त्यांनी पैसे घेतले तर चालतात? काय 10-20 रुपये घेत, अजून काय घेत. मग तुमच्या जीवावर त्यांचं पोट चालतं पोलिसांचं? त्यांच्या जीवावर आमचं पोट चालतं. कसं काय? होय, आम्हाला माहिती आहे ना, कारण आमचं लहानपण गेलं आहे ना ट्रेनमध्ये. आपल्याला कसं आहे, टायमावर घरी जावं लागतं, आपल्या मुलांना जाऊन व्यवस्थित बघावं लागतं, याच्यासाठी आपण जास्त नाही करत. 10-20
₹20 प्रॉब्लेम भागतोय तर मग काय प्रॉब्लेम आहे, नाही का? Mr. Subhash Gupta, head of an organization Mumbai Yatri Sangh. मुझे लगता है कि फेरी वाला जितने भी हैं, हर फेरी वाले को मालूम है पैसेंजर कहाँ बैठता है, कहाँ उतरता है, कहाँ जाता है, और उसके साथ में कौन कौन उसके दोस्त है और क्या क्या सामान रेलवे उसके हाथ में रहता है। मेरे ख्याल से ऐसे फेरी वालों के साथ में रेलवे ने प्रवासी मित्र करके उनके साथ संबंध बढ़ाने चाहिए और उनको इन्फॉर्मल करके जो है यूज़ करना चाहिए। ऐसे स्थिति में ये फेरी वाले बता सकते हैं कि ये पैसेंजर है, ये पैसेंजर तो नहीं था या नया पैसेंजर कौन आ गया। मुझे लगता है मुंबई की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए इनका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। In fact, I would say that they are being used as informers and they are the right people. I would talk, if I move away slightly from the railways, this KPS Gill, who was made Director General of Police in Punjab, he said he fought terrorism in Punjab through street vendors. He says they are the eyes and ears of the area and they can give information to the police. Now what is happening here is that the same thing can happen with the railways. The ones who know, because it's also in their interest to see that antisocial elements don't come there, because so that otherwise they know that they will be blamed for it. So they would also try to chase these people out. Yet we tend to blame them because they are poor, and you know, every time anything goes wrong, we always blame the poor for everything. We forget the type of positive role they play in this. There are many different expenses looked after through the hard-earned money by these hawkers. स्कूल जाता हूँ 9th में, साइंटिस्ट या इंजीनियर। क्यों? मेरी अम्मी की ख्वाहिश है। पढ़ाई अच्छी लगती है? अम्मी क्या कहती है? बोलती है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना और बड़े होके कोशिश करना कि इंजीनियर बन जाओ या साइंटिस्ट, किसी का कोर्स कर ले। करोगे? अपने बाकी के भाइयों को डालोगे इस बिजनेस में? ये बिजनेस सिखाओगे? ये वाला? ये नहीं, इसका। क्यों? थोड़ा वो धंधा करेंगे, बेच के फिर कुछ ना कुछ उसको काम पे, मतलब कंप्यूटर सिखाने पे लगा देंगे। मागे महिन्याची शाळेची फीस जेवणाचे पैसे, बारक्या बहिणीला पुस्तक, पेन्सिल। मैं मेरी माँ को संभालता हूँ। मेरी माँ है गांव में, मेरे डैडी नहीं है। मेरी माँ डायबिटीज की पेशेंट है, उनकी महीने की दवाई आती करीब 2-2,500 रुपये की मेडिसिन, और मैं संभालता हूँ यहाँ से। हर महीने भेजता हूँ मैं उनको 3,000 रुपये, 4,000 रुपये। खाना पकाने के लिए होता है और मेरे भाई लोग के लिए खर्चा खुराक के लिए होता है। मेरा अब्बा एडमिट है। क्या हो गया? हॉस्पिटल में बीमारी है। रोज को उनको ना 300 रुपये की सुई लगती है। नवरा दारुडे आज 40 वर्षापासून सोडून गेले मुलगीच्या जन्मापासून। नापत्ता झालेला आहे। मुलांचं लग्न या धंद्यावर माझं केलं। डॉक्टर सब डॉक्टर के पास आते हैं ना। हाँ, इसलिए सब लोग को सब ठीक करते, इसलिए माझी कमी मुलांची फी। मग हॉस्टेलला कुठे आहे? ती भाईंदरला आहे, तर आम्हाला ओळखत सुद्धा नाही की तुम्ही आमचे आई बाबा। There can be any number of solutions to deal with this hawkers issue and the emerging needs of city like Mumbai. For example, providing these hawkers with licenses and legalizing them, or having a strict code of conduct to avoid inconvenience to commuters, and many more. But what is more important is that we consider these hawkers as equal human beings. They are not only an integral part of Mumbai Railways, but our daily lives too. They are actually the service providers who strive to serve millions of us, the commuters, every single day. But after witnessing their struggle to live respectfully and courage to dream, more than everything one feels, they are the living inspirations to all of us. जिस रास्ते पर खड़े होकर सब मरने की दुआ मांगते हैं, उस रास्ते पर खड़े होकर मैंने जीने की कसम खा ली है। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना